Hello, everyone. Hi, students. Okay, so I hope the time come. I am clearly visible, audible, perfectly fine. Everything's okay. Okay, so I welcome you to this marathon revision. I am your English mentor, Sana Jaffrey. You already know me by now, I'm sure. And welcome to Super Grads. Okay, so you might have realized that be it any examination, we have always come forward to help you people, to guide you people. We leave no stone unturned to ensure that you get all the optimum guidance, the right set of strategies, just the perfectly tailored and curated questions for your adequate preparation, right? तो आज भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. हमने यही सोचा. The forethought behind this marathon was कि कई बार क्या होता है कि see we have a YouTube community as well. As far as the super grad students are concerned, so we have given them extensive classes on every topic that is coming here in IIM Bangalore examination. Okay, hi everyone. सो हमने जो हमारे एसजी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपरली एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी but our YouTube community sometimes is of course getting limited access to our content, so we felt that okay fine, we came up with a rapid revision. I'm sure you attended that, and we felt that you needed more. Students were demanding, they were requesting that we need more practice. तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर देने के लिए, क्योंकि इसके कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, देयर आरंट इनफ सैम्पल क्वेश्चंस इन द मार्केट एज वेल. तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए वी हैव कम अप, राइट? एंड आई होप दैट यू विल ह्यूजली बेनिफिट फ्रॉम इट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, जैसे इफ एनी वन ऑफ यू हैज नॉट सीन माय सेशन ऑन रैपिड रिवीजन, काइंडली रिविजिट. ठीक है? एंड अभी मेरे साथ में एंड तक बने रहिए, पार्टिसिपेशन दिखाइए, सॉल्व क्वेश्चंस विद मी. See, English may you will come across, lengthy passages, you will get paragraphs all on the lines of the sample paper provided by IIM Bangalore. Okay? And don't you take this exam lightly, because I understand it's a distance learning program. I understand कि पहली बार हो रहा है. लेकिन एक चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये है IIM Bangalore, one of the best IIMs. Okay, so don't you underestimate its course, its program, and understand that yes, there will be heavy competition even for this particular course. Okay, so let's कहते हैं ना, roll up your sleeves and let's get going. So we begin with the first question. Sample paper में क्या क्या चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी थी. देखो, हम बिफोर आई जंप टू दिस, देखिए पैराजम्बल्स थे, पैराजम्बल्स थे, idioms पे क्वेश्चन थे. Okay, fillers or fill in the blanks were there, and a lot of questions on RCs were given, right? Something different that we saw was para summary. So इन्हीं लाइंस पे प्रेपरेशन करेंगे, जो सैंपल पेपर में दिया वही आज लेके आई हूं मैं आपके लिए. हाय हाय, नो प्रॉब्लम. Would I continue with editorial analysis? So there are many students who are, whenever they get an opportunity, they're asking me, requesting me to continue with that. Yes, we plan to continue, but then there's an interim break. I am not sure when we'll be able to do that. But ओके, देखते हैं, पॉसिबल होगा, बैंडविड्थ होगा, बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? ओके, सो अभी पैराजम्बल्स की जब मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रैटेजिकली करना है. आई थिंक सी, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं इसी चैनल पे पैराजम्बल्स को लेके. सो इफ यू वांट टू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैराजम्बल्स, यू कैन विजिट दोज वीडियोस. ओके, अलग अलग फ्रॉम टाइम टू टाइम सीरीज हम लेके आते रहे हैं, सो अच्छे से देखिएगा. If you want those insights, that can be provided through those videos. At this juncture, it's not going to be feasible that I discuss all the things right from scratch. Okay, but मैं यही बोलूंगी आपसे कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है. Overall English section में what I have noticed is students go by intuition. सिर्फ गेस वर्क करते हैं, प्योर गेस वर्क. मैं आपसे एक चीज बहुत क्लियरली बोलूंगी, स्टॉप दिस गेस वर्क. Start doing English or the verbal ability section with a logical approach. लॉजिकली करना है. आप ना ये तुक्केबाजी में करते हो, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है. अब आप बोलो अरे मैम वी डोंट केयर अबाउट नेगेटिव मार्किंग, दैट्स ओके, बट देन यू आर
सी ऑब्वियसली मिसिंग आउट ऑन पोटेंशियल मार्क्स, राइट? तो आप टाइम दे रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है? ओके, सो ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन टू यू, राइट? या तो ओपनर डिसाइड कर लो या फिर मैंडेटरी पेयर डिसाइड करो. लॉजिकली व्हेन यू विल रीड द सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, इससे स्टार्ट होना चाहिए. वो नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट पेयर समझ में आएगी आपको. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द सेंटेंसेस with a lot of concentration and focus, and then read the options and tell me what should be the answer. Come on. I'm giving you time, but not unlimited time for sure. Hanji, what do you think should be the answer? Yes, come on, people. I'm waiting. Shouldn't be taking that much time. You have to be quick. Yes? At least you've read these sentences. It's okay. I understand you might be confused. Okay, the level is not very easy, but the level is pretty moderate. Okay? जैसा उन्होंने सैंपल पेपर में दिया, मॉडरेट लेवल का पैराजम्बल आया था, वो बहुत मुश्किल नहीं था, तो मैंने वही लेवल दी. अच्छा, यू थिंक इट इज 5 ओपनर बता रहे हो आप? चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. फ्रॉम व्हाट वी ईट, from what we eat to how much energy we consume, everything is trackable, not least because our gadgets come equipped with clever senses. Take the recent obsession with self tracking. Now, A is talking about tracking. हर चीज हमारी gadgets में sensors हैं, whatever we do, everything is being tracked. Even what we eat is being tracked. Okay, and this says take the recent obsession with self tracking. तो आपको नहीं लगता कि B should introduce the concept of tracking? बट क्या ये हमारा ओपनर होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? when we read all the sentences, right? Okay, smart technologies are not just disruptive, they can also preserve the status quo. Revolutionary in theory, they are often reactionary in practice. Now this looks like a very generic statement जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है? कि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं वो डिसरप्टिव ही नहीं होती, वो पुरानी चीजें टेक्नोलॉजीज डिसरप्ट करके आगे बढ़ जाती हैं. सिर्फ वो नहीं होती, रेवोल्यूशनरी तो होती हैं. समटाइम्स दे इवन हेल्प अस प्रिजर्व द स्टेटस को. स्टेटस को जो चीजें जैसी है वैसी ही रहेंगी. रेवोल्यूशनरी इन थियोरी, दे आर ऑफन रिएक्शनरी इन प्रैक्टिस. दे आर ऑफ कोर्स अ रेवोल्यूशन. ओके, इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप होता है उनमें, बट देन प्रैक्टिस भी इनकी काफी रिएक्शनरी होती है. नाउ आइडिया इज इसमें डूबने की जरूरत नहीं है. डोंट यू थिंक सो? ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, एंड इन पैराजम्बल्स वेरी ऑफन यू विल फाइंड this idea flow, general to specific, can be clearly seen in many parajumble questions. It's one of the very basic forms of writing. B, Karthik, Tanishk. Okay, looks good. देखते हैं. But it won't take long for governments to start exploring self-tracking as a solution to problems that could and probably should be tackled differently. अब यहाँ पे एक तो कीवर्ड आ गया, बट से स्टार्ट किया. सेकेंडली इट्स टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट्स, ठीक है? कि गवर्नमेंट्स एक्सप्लोर करने लगेंगी सेल्फ ट्रैकिंग को एज अ सोल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, राइट नाउ मोस्ट ऑफ such self-tracking efforts come from the grassroots enthusiasts. ये भी एक पेयर की तरह मुझे नजर आ रहा है. तो अब नाउ दैट आई हैव रेड ऑल द सेंटेंसेस, एक मुझे जो क्लियर सीक्वेंस समझ में आ रही है वो क्या है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं सी से, बिकॉज दिस इज वेरी जेनेरिक. स्मार्ट टेक्नोलॉजीज है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ट्रैकिंग, एंड ट्रैकिंग में फिर डिटेल में बताएंगे और फ्यूचर में लेके जाएंगे कि अब ट्रैकिंग का फ्यूचर क्या है. शायद गवर्नमेंट ही सेल्फ ट्रैकिंग को एक्सप्लोर करने लग जाए और उसको यूज करने लग जाए. सो I would say starting with C, then B. C, then B.
एंड फिर बी के बाद में ए, क्योंकि ए बता रहा है कि इस लेवल की व्हाट इज द डिग्री ऑफ सेल्फ ट्रैकिंग दैट इज टेकिंग प्लेस. ओके, सो देन कम्स ए. Now, listen to me. The moment we decided C has to be the opener, here we got our answer. हमें तो directly answer मिल गया. But I would advise you, you have to be very sure about it. And थोड़ी श्योरिटी के लिए एक आध स्टेप आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. बस चेक कर लो कि यार सी के बाद में क्या आना चाहिए. सी के बाद बी सही लग रहा है क्या, इज इट लॉजिकल इनफ, तो वो आपका आंसर हो जाएगा. तो सी के बाद में बी, उसके बाद में ए, फाइनली ई एंड डी. आंसर इज टू. वेरी गुड स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू गेव मी द राइट आंसर. Good job. Good job. Are you ready for the next question? Let's do it. Okay, I've got to step aside. अब यहाँ पे I hope you can clearly see the first statement and the sixth statement is given to you. They are fixed. तो ये भी एक फॉर्मेट होता है. I wanted you to be familiar with all the possible formats. तो ये भी बहुत कॉमन फॉर्मेट है. The first statement is fixed, the last statement is fixed. You have to just arrange the intermediate statements. So very logical way of doing it is that you will think what should come after one, what should follow one, and what should precede six. And the other things remain the same. Finding the pair and all that, that approach is the same. Answers. You can do one thing and write the question number first, class, okay? So that I have the clarity कि आपने कहाँ से मुझे messages पढ़ने हैं आपके, ठीक है? कौन से question का आपने answer दिया? Okay, you think it is C? The third one, देखते हैं. Okay. The first sentence says a charge on private vehicles in selected areas and at particular times of day would be a reasonable response to externalities they create. So the externalities or the external issues or problems that they create. Now we don't know what are you actually talking about. They remains a mystery. But हम theme से तो समझ ही गए हैं क्योंकि we are talking about charging private vehicles. Okay, so we are referring to the traffic and the problems that are created by that, right? अब ABCD फटाफट पढ़ लेते हैं. Choosing to drive one's own car or other vehicle into a city center puts pressure on limited road space, contributes to pollution and global warming, and results in reduced mobility for all. B. The cumulative time spent in traffic is a major economic loss. Congestion charging schemes, therefore, levy a premium for the privilege of using a personal car, and the funds thus collected should be plowed back exclusively into public transport options. This makes them robust, affordable, and sustainable. And finally, a number of technologies are available to implement a congestion charging system. The challenge is to pick one that reduces transaction costs and is sealed against revenue leakage. So, फर्स्ट ने हमें एक सजेशन दिया, ठीक है, कि दिस इज गोइंग टू बी अ रीजनेबल रिस्पॉन्स. आप क्या करोगे, आप चार्ज लगाओगे प्राइवेट व्हीकल्स पे स्पेसिफिक एरियाज में, और वो भी हमेशा नहीं, एट सम पॉइंट्स ऑफ द डे जहां पे जब शायद ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है. अब इसी को इलैबोरेट आपको नहीं लगता ए कर रहा है? ए इज एक्चुअली डिटेलिंग दिस. और यहाँ पे सी में therefore is a key word, important word है. इससे हमें समझ में आएगा कि सी जो है ये बाद में आना चाहिए. ओके, इससे पहले ए और बी को आ जाने चाहिए. ए बोलता है when you drive your own car,
ठीक है, और एनी व्हीकल इनटू अ सिटी, आपने लिमिटेड, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे काफी प्रेशर डाल दिया, स्पेस पे प्रेशर डाल दिया, यू कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, और सबके लिए मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो ओवरऑल टाइम आपका जाता है ट्रैफिक में फंसे रहने से, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस भी है। तो ये दो चीजें जो हैं ये जस्टिफाई कर रही हैं इस मूव को, और सी जो है वो एक तरह से री इन्फोर्स कर रहा है इस चीज को, देयरफॉर कंजेशन चार्जिंग स्कीम्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो आपको चार्ज करती हैं, दे लेवी अ प्रीमियम, यू हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर गेटिंग दिस लग्जरी और प्रिविलेज ऑफ यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल। और इस प्रीमियम से होगा क्या, ये जो पैसा सरकार को मिलेगा, तो सरकार क्या कर सकती है, द गवर्नमेंट कैन पंप इट बैक टू इंप्रूव द ट्रांजिट सिस्टम, ओके, सो इट शुड बी प्लोड बैक और पम्प्ड बैक टू इंप्रूव द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, ए बी सी और फाइनली डी, दिस मेक्स देम रोबस्ट, दिस मेक्स देम, अब हम पॉजिटिव पे आ गए, तो सी डी भी आपकी एक बहुत प्यारी पेयर है, तो आपकी पेयर है सी डी, और आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट के बाद में ए बी सी आ जाना चाहिए, ए बी सी डी इज द सीक्वेंस, फोर्थ इज द आंसर। समझ आया कि नहीं समझ आया, मुझे बताओ। लॉजिकल है भाई, सी, इफ you only rely on just reading the sentences and just conjuring a sequence somehow magically or intuitively, this is not going to work in parajumbles. Parajumbles are very logical, your sequence has to be very precise, you have to have definite reasons for what are you selecting as the answer and why is that so. So there is no तुक्केबाजी that takes place. English में बच्चों के नंबर इसलिए नहीं आते, आपको लगता है कि हाँ ये सही लग रहा है, नहीं सही क्यों लग रहा है, इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी लॉजिकल, ठीक है, ओके, हाँ तरुष, हाय, गुड टू हैव यू हियर। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन टाइप के मैं मल्टीपल क्वेश्चंस लाई हूं आज, आज तो अच्छा लंबा बैठ के साथ पढ़ाई करना है हमको, ठीक है, ओके। इवन इफ यू आर वॉचिंग अ रिकॉर्डेड सेशन, मान लीजिए अभी आपकी कहीं और कोई क्लास है, कोई और एंगेजमेंट, एंड यू नॉट वॉचिंग मी लाइव, इवन देन यू हैव टू पॉज द वीडियो, solve the question, then tally your answer. Otherwise, there's absolutely no point. You're not learning anything then. You are a passive viewer. If you don't participate, if you don't solve, if you don't practice, you're not benefiting from it. चलिए ठीक है, करिए। हाँ जी, अभी थ्रू, it's a fairly doable one, it's not that difficult. Okay, come on, shoot your answers, everyone. You've got to participate. चलो ठीक है, डिस्कशन करें। ओके ओके, यस यस, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड तरुष। बर्थ डेथ आपका नाम जो भी है मुझे पता नहीं, ऐसा फिलोसफिकल नाम क्यों रखा है भाई, ओके, कार्तिक, करेक्ट आंसर, दृष्टि वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम मैड, oh my god, no you're not, you have given me the right answer, how can you be mad? All right, तो तुम लोग ऐसे खतरनाक नाम क्यों रखते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
बहुत फर्क होता है persuasive और informational tone में. There's a query, I think I must take this up. Though it is not related to Parajumbles, but certainly an important question for this particular exam. Huh. So you're asking me the difference between persuasive tone and informational या informative. Informative तुमको सिर्फ information देती चली जाती है. उसका पर्पस तुम्हें किसी चीज के बारे में बताना होता है, इंफॉर्मेशन देना होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. परसुएसिव ऑन द अदर हैंड, देखो एनी टोन, आप इतना तो समझो, व्हेनेवर यू राइट अ पैसेज, तो पैसेज में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो होती ही है. फैक्ट्स तो हर पैसेज में होंगे, आइडियाज तो हर पैसेज में होंगे, बट देन व्हाट डिटरमिन्स द टोन इज द एडिशनल बेंट जो आपको समझ में आएगा, ऑथर का पर्पस जो आपको समझ में आएगा, और वो जो एटीट्यूड होता है ऑथर का टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, वो होता है टोन. ठीक है बेटा. सो नाउ द पॉइंट इज कि इंफॉर्मेटिव में वो सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है, कुछ आगे पीछे नहीं बता रहा. But persuasive में the author is trying to convince you, persuade you to take up some particular action. तो अगर मैं climate change की बात करती हूँ and I simply give you some facts, I tell you about the current grim situation of climate change. This is going to be informative. I tell you about Kyoto Protocol. I tell you about Paris Agreement. I tell you about SDGs, Sustainable Development Goals. But I don't say anything around it. That's it. I just give you the information. So you know about climate change now, right? That's informative. बट अगर ऑथर उसके साथ में बार बार आपसे ये बोल रहा है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, या ह्यूमंस को अब ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हाई टाइम दैट वी टुक इट सीरियसली, राइट, एंड इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट थिंग्स, तो यानी कि वो आपको कन्विंस कर रहा है कि यार ये अब कोई एक्शन हमें क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए करना ही पड़ेगा. ये हो जाता है परसुएसिव. इज दिस मच क्लियर? टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट बेटा, यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. Okay, I'm not the right person to be answering that. You can approach top rankers, right, and they will answer everything. तो आप support जो होता है उनको contact कर सकते हैं. चलिए ठीक है. Coming back to this question, we have constructed it from unfortunate habits of thought about how to handle spiraling public debt. ठीक है. With much of the global economy apparently trapped in a long and painful austerity-induced slump. Slump क्या होता है? आप रिसेशन में जा रहे हो, स्लम्प हो गया ना, एकदम डाउन जा रहे हो. ठीक है. तो जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है पूरी की पूरी आप क्या हो रही है, स्लम्प पे जा रही है. इट इज टाइम टू एडमिट दैट द ट्रैप इज एंटायरली ऑफ आवर ओन मेकिंग. ऑस्टेरिटी इंड्यूस्ड है ये. अब आप समझो कि ऑस्टेरिटी क्या होती है. व्हेन यू आर ऑस्टियर, व्हाट डज दिस मीन? यू आर बीइंग वेरी एब्स्टेमियस बिकॉज़ यू आर लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ. तो ऑस्टेरिटी मींस बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हो यार, एकदम बस दाल रोटी खा के गुजारा कर रहे हो. अब ये सब जब होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है वो तो डाउन जाएगी, बिकॉज नोबडी इज देयर टू डू लग्जूरियस शॉपिंग. ठीक है. तो इसको ये कह रहा है कि ये जो है दिस इज ऑफ आवर ओन मेकिंग, ये सब हमारे ही वजह से हो रहा है. अब यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड लगता है. वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट फ्रॉम अनफॉर्चुनेट हैबिट्स ऑफ थॉट अबाउट हाउ टू हैंडल स्पाइरलिंग पब्लिक डेट. ओके, ये हमारे ही वजह से हो रहा है, हमारे गलत हैबिट्स हैं, हमारे गलत थॉट है कैसे हमको डेट को, पब्लिक डेट को कंट्रोल करना चाहिए. पीपल डेवलप दीज हैबिट्स. Repetition also suggests continuity. ये याद रखना. People develop these habits on the basis of the experiences of their families and friends. When in debt trouble, one must cut spending and pass through a period of austerity until the burden is reduced. तो ये हैबिट्स हमें कहाँ से आए? हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आए, फैमिली से आए, फ्रेंड से आए कि भाई तुम पे कर्जा है, शर्म करो, तुम सोना खरीदने जा रहे हो. अभी जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाता तब तक एकदम ऑस्टियर लाइफस्टाइल जीना है, एकदम सिंपल सिंपल रहना है, बिल्कुल खर्चे बिल्कुल नहीं करना है. इट सीम्स लाइक कॉमन सेंस, इवन मॉरल वर्च्यू टू रिस्पॉन्ड दिस वे. विच वे? जो ये बता रहा है. दैट मीन्स नो मील्स आउट फॉर अ while, no new cars and no new clothes.
घर में बनाओ, बाहर मत जाओ रेस्टोरेंट में, नए कपड़े मत खरीदो, अभी ऑलरेडी इतने सारे हैं. दैट मीन्स व्हाट? आई थिंक यहाँ पे हमको पैर मिल रही है बहुत जबरदस्त. मेरे हिसाब से सी के बाद में ई आ जाना चाहिए और फाइनली डी आ जाना चाहिए. सी ई डी एक ट्रायो है. वुडंट यू अग्री? इट्स अ सीक्वेंस. मैंडेटरी पैर क्या, हमने तो तीन लगा लिए एक साथ. ठीक है ना? तो सीई डी जो है वो सेम जाएंगे. और स्टार्ट हम बी से कर सकते हैं क्योंकि हमें पिक्चर दे रहा है ये कि यार पूरी दुनिया में रिसेशन हो रहा है, स्लम्प हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव बिकम वेरी ऑस्टियर. क्यों हम ऑस्टियर हो गए? क्योंकि हम कर्जे में हैं. एंड व्हाई इज दिस स्लम्प टेकिंग प्लेस? बिकॉज हमने अपने ही ये जो थॉट है कि कैसे आपको खर्चा, जब कर्जा है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए. एंड देन इट इज पर्टिकुलरली टेलिंग यू अबाउट द हैबिट्स. जो हैबिट्स यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता ए सी भी एक पैर है? सभी कनेक्शन है, ए सी भी एक पैर है और बी के बाद में भी ए आना चाहिए. क्लियर समझ में आ रहा है? थर्ड जो है वो आंसर होना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. देखिए, ऑस्टेरिटी इज नॉट द सेम एज ascetic, बट ऑस्टेरिटी इज डेफिनेटली अ फीचर ऑफ ascetic. ascetic जो होते हैं दे आर लाइक यू आर लिविंग लाइक अ hermit, है ना? बहुत ही एस्थेटिक, तो बहुत ही सिनोनिमसली हम इन वर्ड्स को ले सकते हैं. तो व्हेन यू आर एस्थेटिक तो यू गिव अप ऑन ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लिव अ लैविश लाइफ. बहुत ही यू हैव टू बी abstemious, you have to refrain yourself from everything, right? तो austerity and asceticism are very much, they go hand in hand, I would say. चलिए ठीक है, finally two more questions, question 4 and question 5, that's it, and then we will change and then we will do some idiom based questions. चलिए फटाफट लगाइए. You have to read fast, you have to establish links, you have to take notice of the keywords, because उसी से पैर बनेगी आपकी, वरना पैर नहीं बन पाएगी. Speed up, speed up. Okay, I think you should be through by now. Yes, Karthik, that's the right answer. Bravo, well done. Expecting correct responses from many of you. Come on, quick. लॉजिकल होता है. एक बार पैर समझ में आ जाए या ओपनर समझ में आ जाए, फटाफट ऑप्शंस पे जाओ. इंदौर में आपके पास में आईपी मैट, इंदौर में यू डोंट हैव दी ऑप्शंस. दैट्स अ वेरी मेजर सेटबैक, बट व्हेन यू हैव ऑप्शंस ना, इट बिकम्स अ वेरी डूएबल थिंग. फिर इतना मुश्किल नहीं होता है पैराजम्बल, बल्कि पैराजम्बल इज सो मच फन. Okay, I am much more intolerant of a human being's shortcomings, shortcomings or the limitations, than I am of an animal's. But in this respect, I've been lucky, for most of the people I've come across have been charming. Comparison of humans with animals. Let's quickly read all of them and then फिर मैं आपको बताऊंगी क्या links निकल रहे हैं. Then you come across the unpleasant human animal, the district officer who drawled, "We chaps are here to help you chaps," and then proceeded to be as obstructive as possible. ड्रॉल करना मतलब क्या होता है? एकदम लो टोन में बोलना, खींच खींच के, लेजी वे में. In these cases, of course,
The fact that you are an animal collector helps people always seem delighted to meet someone with such an unusual occupation and go out of their way to assist you. Fortunately, these types are rare, and the pleasant ones I have met more than compensated for them, but even so, I think I will stick to animals. When you travel around the world collecting animals, you also of necessity collect human beings. आपको क्या लगता है क्या ओपनर होना चाहिए? कौन सा सेंटेंस है? यस बेटा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप तानिश्क. मैड, मिस्टर मैड एंड बर्थ डेथ, बिल्कुल सही आंसर्स. ओके, योर नेम्स आर सो अम्यूजिंग टू मी. फाइन. सो जो ओपनर है आपको नहीं लगता ई होना चाहिए? क्योंकि ई जो है ना वो कितने बढ़िया तरीके से आपको बता रहा है ऑथर के बारे में कि वो है क्या, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो एक ओपनिंग सेंटेंस है फॉर श्योर. वो कहता है कि जब मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ एनिमल कलेक्ट करने के लिए तो तब मैं ह्यूमंस भी कलेक्ट कर लेता हूँ. नाउ दिस इज अ मेटाफोरिक थिंग. ये मेटाफोरिकली बोल रहा है कि आई कलेक्ट ह्यूमंस. ही सिंपली मीन्स दैट आई गेट एनकाउंटर्स विद ह्यूमंस एज वेल. ठीक है. सो ये इनका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है. मे बी ही इज सेविंग एनिमल्स, या कोई भी वाइल्ड लाइफ वाले जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो जब आ जाते हैं ह्यूमन कॉलोनीज में उनको कलेक्ट करके सैंक्चुरीज तक पहुंचाना. ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं. तो ऐसा ही कुछ बंदा ये करता है और वो कह रहा है कि ह्यूमन से भी इंटरेक्शन होता है. अब ई से स्टार्टिंग है तो वी हैव टू ऑप्शंस. ई के बाद में या तो ए या ई के बाद में सी. बी और डी तो आउट ऑफ द गेम हो गए. मीनवाइल हम ये देख सकते हैं कि सीबीडी तो पैर ही है दोनों में, मतलब एक ट्रिपलेट है रादर. तो ए का मुद्दा है कि ए को एंड में लगाएं कि ए को ई के बाद में लगाएं. देखते हैं. ए, I am much more intolerant of a human being's shortcomings than I am of an animal's, but in this respect I've been lucky. ज्यादातर लोग मुझे अच्छे ही मिले हैं. मुझे इंसान की लिमिटेशन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो इंसान है, वो सोच सकता है. जानवर की मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ. आई थिंक ई के बाद में ए आ सकता है क्योंकि वो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ज्यादातर जो लोग मुझे मिले हैं दे हैव बीन वेरी नाइस चार्मिंग पीपल. ओके. और वो कहता इन दीज केसेस ऑफ एनकाउंटरिंग ऑल दीज नाइस चार्मिंग पीपल द फैक्ट दैट यू आर एन एनिमल कलेक्टर हेल्प्स. लोगों को बड़ी खुशी होती है जब भी कोई इस टाइप का बंदा, इस प्रोफेशन का बंदा आता है उनसे मिलने, तो उनको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है. दे फील वेरी एंटरटेन्ड एंड दे गो आउट ऑफ द वे टू असिस्ट. देन यू कम अक्रॉस द अनप्लेजेंट ह्यूमन एनिमल, तो फिर बी आ जाएगा. लेकिन कुछ अनप्लेजेंट लोग भी होते हैं. अभी उसने अच्छे लोगों के बारे में बताया पॉजिटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव के बारे में बता रहे हैं. बट वो कह रहे फॉर्चुनेटली दीज टाइप्स आर रेयर. तो डेफिनेटली ये तो कंक्लूजन ही हो गया ना, एक तरह से एंड में ही आना चाहिए. तो फॉर श्योर ए शुड बी द आंसर, है ना. बी, ए, सी, बी, डी. बड़ा इंटरेस्टिंग. फाइनली सर कंक्लूजन यही है कि अच्छे लोग भी हैं, एंडियरिंग लोग भी हैं, बट आई विल स्टिक टू एनिमल्स. मुझे तो एनिमल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं ह्यूमन से. आंसर हैज टू बी ए. इज दिस मच क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल्स. फटाफट पढ़िए. बी क्विक. Okay, let's do it together to save time. Many center around practical needs. अब ये many किसके लिए बोल रहे हैं? Getting meat out of fire, speed, using whatever is around. तो ये many पता नहीं किसके लिए है. ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है. ये एक्चुअली है ई के लिए. There are many stories of the provenance of chopsticks, which in some form have been entrenched in Chinese history for thousands of years.
तो चॉपस्टिक्स चाइना में इतनी पॉपुलर क्यों होती है? हर चीज वो लोग चॉपस्टिक्स से खाते हैं, हमसे तो पकड़ते भी ना बने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टोरीज हैं कि why is this so important for Chinese culture, right? Many center around many what? Many stories. अब ये अगर आपने पकड़ लिया कि ई के बाद में ए आना चाहिए तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज बाकी सिर्फ आपको अलग अलग यूटिलिटी बता रहे चॉपस्टिक की। ठीक है, तो मैनी स्टोरी सेंटर अराउंड प्रैक्टिकल नीड्स कि भैया आपको मीट निकालना था फायर से, या जल्दी जल्दी काम हो जाता है, या आपके पास में कुछ कुछ भी नहीं पड़ा था, जो पड़ा था चॉपस्टिक ही पड़ी थी कुछ इस टाइप की, वही इससे काम कर लिया। दिस इज हाउ इट बिकेम पॉपुलर। ठीक है, तो ई ए इज द पेयर एंड इट हैज टू कम इन द बिगिनिंग, सो 3 इज द आंसर। आप यहाँ पे देखो, there are also many superstitions attached to them, be simply telling adding something to it कि कुछ superstitions भी हैं। ठीक है, कि गिर जाएं तो बैड लक है, राइट? आप अपनी ऐसे राइस में अपराइट नहीं इसको कर सकते, वो गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा डी, देन देयर इज द लॉन्ग लिस्ट ऑफ चॉपस्टिक्स डोंट्स, है ना? तो आई थिंक ये बी के बाद में डी ज्यादा अलाइन हो जाएगा, सुपरस्टिशन एंड नेगेटिव्स, एंड फाइनली कुछ कस्टम्स उसके अराउंड, तो ये सही हो जाए। अगर आप ई ए नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, ई एज द ओपनर फॉलोड बाय ए, तो आप सोचते रह जाते, आपसे क्वेश्चन क्रैक नहीं होता। ठीक है, नाउ ईडियम्स पे बात करेंगे। बहुत प्यारे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, वो मैंने आपके लिए क्यूरेट किए हैं फिलहाल। सो लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2. रीड द डायरेक्शंस केयरफुली। यस, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा रिवर्स टाइप का है, आपको इसके लिए ईडियम, करेक्ट ईडियम चूज करनी है। ओके, विच ईडियम वुड be a good one for this, a good fit or a good replacement for the underlined words? So first का आंसर तो, yeah, well done. After the death of his father, Ramesh is playing ducks and drakes with his inherited property and is sure to ruin himself. Now the point is, हम सब क्या करते हैं normally, because we don't know idioms well enough. So I have seen students just guessing it. Contextually आपने उसको guess कर लिया और आपने मार्क कर दिया जो आपको सही लगा। जैसे किसी बच्चे ने मार्क किया है gambling. Playing ducks and drakes does not mean gambling. You will always be given confusing choices. Please understand. So the approach should be that you have to know the idiom. If you know the idiomatic expression, वो बन जाएगा आपसे, नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, so playing ducks and drakes जो होता है उसके होते हैं दो मतलब। एक तो उसका मतलब होता है जो बहुत ही सबसे ज्यादा मेजर मतलब है, that you squander or waste something, या बहुत ही you act in a very reckless or a very careless way with something, with any of your resources. तो तुम बड़े ना recklessly, carelessly अपने resources को waste कर रहे हो, and this is precisely captured here, this meaning is captured here. So to spend lavishly, he has inherited money. पापा जी हमेशा तिजोरी में रखते थे पैसा, अब पापा जी चल बसे तो पापा जी का पूरा पैसा मेरे पास आ गया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। This is what is precisely happening here. So B looks like the right answer, and this is indeed the correct answer. The other meaning, however, playing ducks and drakes is when you try to cheat people, you try to deceive people. You kind of play tricks to fool them, okay, or to loot them, to dupe them. That also is called playing ducks and drakes.
तो यहाँ पे however of course बी बीटा का ही मीनिंग निकल के आएगा. बैड हैबिट्स, हॉर्स ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, ये सब गलत है. A video call from my favorite film star on my birthday was a complete surprise. So when we say a complete surprise, when something happens unexpectedly or surprisingly, तो वो क्या हो सकता है? What is it? It is bolt from the blue. Bolt from the blue का मतलब होता है कोई चीज एकदम से कहां से आ गई अचानक से. Bolt from the blue. ठीक है? So anything that happens unexpectedly or suddenly, okay, that surprises you is a bolt from the blue. What is a damp squib? Damp squib is something जो आपको बड़ी उम्मीदें थी उससे, बट वो एकदम फ्लॉप हो गया. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो हमारे हीरोज होते हैं उनके जब बच्चे आते हैं एक्टिंग करने, तो बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत एडवर्टीजमेंट होता है कि अरे ही इज अ स्टार किड, ही इज अ स्टार किड, ही इज कमिंग, और जब वो आते हैं और वो एकदम फ्लॉप हो जाते हैं. सो डैम्प स्क्विब. आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल. So something that looks very promising but suddenly fails, that is a damp squib. ठीक है? Field day. Field day is, yeah, a day when you have a lot of fun. अब आप ऐसे सोच सकते हो कि आप फील्ड पे अगर दौड़ रहे हो, खुश हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, यू हैविंग फन टाइम, है ना. आज अगर मुझसे बोला जाए कि लेट्स स्पेंड अ डे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, what would you like to do? Would you like to go to a club, disco, shopping mall में, या फिर to watch a movie, or to a nice resort, or you know इस टाइप की कोई रिट्रीट जहां पे एकदम फार्म हाउस? तो मैं बोलूंगी भैया फार्म हाउस. फील्ड डे मतलब एकदम नेचुरल सीनिक ब्यूटी होगी, वहां पे आप एंजॉय करोगे. मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दिस. फील्ड डे, when you are there in the field, you are free, you can roam around wild, you can enjoy your day. That's a field day. A mare's nest is a very confusing situation. A confusing situation. Answer is B, beta. Come on, class. Answer these. Question number 3 and 4. Yes, are we through? The good part about these questions is that they don't consume your time. Waste नहीं करते आपका टाइम, फटाफट हो जाते हैं. They're so quick to solve. So if you're good with these questions, if you're good with idioms, if you're good with vocabulary, fill in the blanks, you must do them first, right? Okay. She took into her head to leave her job in no time and go to her parents. Yes. What do you think? Took into her head. Half-heartedly decided, a sudden idea, after careful thought, none of these. It's B, beta, a sudden idea. Took into her head. Suddenly कहां से दिमाग में ये फतूर आ गया कि फट से impulsively कोई चीज कर ली, without enough deliberation, without a careful analysis of the situation. When you take up a sudden idea, कहते हैं, I don't know what she took into her head. ठीक है? A sudden idea is going to be the right answer. अपनी जॉब छोड़ के बस सोचा मैं तो बस पेरेंट्स के पास जा रही हूँ. Okay. Sheila stood by her husband in wheel and woe. I think this is a very easy one. What do you think should be the answer? Wheel and woe is prosperity and adversity. Adversity are the unfavorable situations, the difficult times. Okay. So वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही अच्छे और बुरे वक्त में, दोनों में. ठीक है?
Now some of you might be thinking in hard times, but no, it means that एक और कहते हैं ना through thick and thin. I'll stand by you through thick and thin. एक और ये expression है वही through good and bad times. ठीक है? Okay. Read the directions and attempt these questions, and after this we will move to fillers or fill in the blanks. हाँ जी, are we there? Yes. So ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिवर्स वाले हैं. अब यहाँ पे तो तुमको इडियम पता ही होना चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट रीड द सेंटेंस एंड इंटरप्रेट एंड गेस द मीनिंग, है ना. जहाँ पे इडियम यूज्ड है वहां पे आपको उसका मीनिंग पूछा जा रहा है तो आप सेंटेंस पढ़ के शायद थोड़ा बहुत गेस भी कर सकते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में यू गॉट टू नो द idioms, right? All the options you should be aware of. Yes, what do you think are the answers? Okay, Karthik. Fair enough. चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं. Question 5. The article on the world population published in today's journal is a duplicate of what was published the other day. Duplicate के लिए कौन सा हमारे पास में idiom होता है? It's a dead ringer. Dead ringer means a duplicate. What does on tenterhooks means? What does it mean? On tenterhooks जब आप हैं तो आप बहुत बेचैन हैं. You are in extreme anxiety and you're wondering what's about to happen. Okay, on tenterhooks. When she got to know that it's her exam result is going to be out in a day, she was on tenterhooks the whole day. Okay. Catch 22. कैच 22 एक बिल्कुल अलग टर्म होता है. कैच 22 एक ऑफन इस टाइप का टर्म होता है जो एक तरह का मैं बोलूं आपको, हाउ डू आई पुट इट अप, कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है. it's perplexing situation, it's a very confusing situation. It's catch 22, right? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फ्रेशर है और वो एक कंपनी में अप्लाई करता है, तो कंपनी वाले बोलते हैं नो, वी ओनली टेक एक्सपीरियंस्ड पीपल. जहां वो जा रहा है वो यही बोले हम एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखते हैं. तो इट्स अ कैच 22 ना. जब तक कोई एम्प्लॉय नहीं करेगा उसको, उस बंदे के बाद एक्सपीरियंस कैसे आएगा? और आपको सिर्फ एक्सपीरियंस लोग ही चाहिए. सो एक कैच 22 है. अ वी बिट मतलब अ लिटिल बिट. Question 6. Even though he's a learned person, he talks nonsense when it comes to morality and integrity. Talks nonsense. A. Talk through one's hat. When you talk through one's hat, एक तरह से ऐसे इसको याद करने की कोशिश करो that you are not using your head, you are using your hat instead to think. बहुत ही superficially ऊपर ऊपर से सोच के बातें कर रहे हो. सही मानों में दिमाग लगा नहीं रहे हो, बस हैट ही लगा रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे. So when you talk through your hat, you are speaking nonsense. Bark up the wrong tree. Approaching a problem in a wrong way. और अप्रोचिंग द रॉन्ग पर्सन, है ना. आपकी अप्रोच में गड़बड़ है. यू बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स. कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, यार एनीबडी ऑन हॉट ब्रिक्स वुड बिकम सो रेस्टलेस, राइट? तो जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा है, बावला हो रहा है, इज नॉट एबल टू कंटेन हिमसेल्फ, ओके, बहुत ही अनईजी है, बहुत ही रेस्टलेस है, तो हम कहते हैं व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स.
show a clean pair of heels is to run away. The con man showed a clean pair of heels when he discovered that the person he was trying to dupe was a police inspector himself. ओके कैसे वो एकदम रफू चक्कर हो गया. A few more, let's do them फटाफट. Let's quickly crack them. Oh, there's a question. On tenter hook is same as cat on hot bricks. Not precisely. देखो on tenter hooks में क्या होता है? When you are anxious about something, when you are mostly हम उसको when you're eagerly waiting or anxiously waiting for something उस सेंस में ज्यादा यूज करते हैं. कैट ऑन हॉट ब्रिक्स तो तुम मतलब थोड़ी बुरी हालत में हो, या तो तुम बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हो, अनईजी फील कर रहे हो. दैट इज व्हेन वी यूज इट. ओके, yes, can we discuss these? Question 7. Being an atheist, he differs strongly with his parents' teachings on principles and the idea of the Almighty. Differs strongly with someone when आपका और उनका ओपिनियन मैच ही नहीं करता. ठीक है, यू आर एट लॉगरहेड्स. लॉगरहेड्स हम तब भी बोलते हैं व्हेन यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. जब आप कॉन्फ्लिक्ट में हो, बिल्कुल है ना, पटती नहीं है दोनों में, एट लॉगरहेड्स. कॉल अ स्पेड, जो बात है फ्रैंकली वो बोलना. बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत मेहनत करना. ठीक है, रात रात को जाग जाग के, है ना, यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू क्रैक IIMs. कीप वन एट बे, डिस्टेंस मेंटेन रखना. ओके, दूरी बनाए रखना. शी हैज टू बिगिन gaining experience if she wishes to join the media industry. Cost an arm and a leg when something is very expensive. Okay, it cost me an arm and a leg. Okay, get one's feet wet is get some experience. Dot the i's, cross the t's, matlab check details. To sit on the fence, to be undecided about something. You're unsure about something. Someone sitting on the fence thinking, यार मैं अंदर जाऊं कि बाहर जाऊं. So person is very undecided and maybe they're trying to buy some time because they don't know what to do. Exactly. ठीक है? And now we change the topic. I think phrasal verbs बाद में कर लेंगे अगर टाइम मिला तो. Let's move to fillers. Fill in the blanks. मुझे लग रहा है आएंगे शायद ज्यादा नंबर में आ सकते हैं. You can expect 2 to 3 fill in the blanks. हाँ जी, what's the answer? बताइए. ओके, सी फिल इन द ब्लैंक्स में एक गलती मत करना. बच्चे क्या करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे सेंटेंस पढ़ा बस और कूद पड़े ऑप्शंस में.
हर ऑप्शन को प्लग इन कर करके देख रहे, जो सही लग रहा है वो सिलेक्ट कर दिया. I think this is a very faulty approach. First of all, you have to read and understand the sentence really well. You'll have to imagine or envision or envisage what kind of a word are you looking for in the blank, in the given blank. If there are two blanks, maybe you understand what kind of a relationship should be there between the two blanks. Sometimes there are keywords that speak volumes about the structure of the sentence, and thereby you can definitely deduce what kind of a word would be required to fit in that particular blank. ठीक है, तो देखते हैं. The serious purpose of the paper airplane flying contest, which attracted many novel and sometimes truly dash entries, was to determine whether any dash aerodynamic designs could be discovered. Okay, so पेपर एयरप्लेन फ्लाइंग कॉन्टेस्ट है. पेपर का एयरप्लेन का मॉडल बनाना है पेपर से, ऐसा एक कंपटीशन. और इसमें भी बहुत नॉवल एंड समटाइम्स ट्रूली डैश एंट्रीज. तो अब वो एंड है, नॉवल होती है एकदम नई, तो नई एंड कुछ उससे मिलता जुलता कुछ होना चाहिए. नई, अजीब, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, ऐसा कुछ वर्ड. Now, what was the purpose? उसका एक serious purpose था, was to determine whether any dash aerodynamic designs could be discovered. क्या पता aerodynamics से related design कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम फ्यूचर में उसे implement कर पाए और better aeroplanes बना पाए. Okay? क्या unorthodox आ सकता है पहले उसमें? आ सकता है. Unorthodox is something which is very different, which is new, which is not traditional or orthodox. But conventional would not fit in ना. Conventional का तो मतलब होता है traditional. तो ट्रेडिशनल एरोडायनेमिक डिजाइन चाहिए आपको, वो तो सबके पास में है ही. हम तो कुछ नया चाह रहे हैं ना, तो सेकंड ब्लैंक में कुछ रेवोल्यूशनरी टाइप का आना चाहिए. तो ए तो नहीं हो सकता. बिजार, बिजार इज स्ट्रेंज, वियर्ड. हाँ, कभी कभी कुछ बहुत अजीब एंट्रीज भी आ जाती हैं. नॉवल तो आती है, साथ में कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल, वियर्ड, स्ट्रेंज एंट्रीज आ जाती हैं. तो बिजार हो सकता है. The purpose was to determine whether any revolutionary design can come up. Yeah, this is so good. ये हो सकता है. B, beta looks like a good option, but you have to check each and every option before you jump the gun. Okay, jump on the gun rather. Truly derivative entries. Derivative नहीं आ सकता. Derivative जो आप किसी और से derive किया. अब वो and करके दिया हुआ है novel के साथ में, तो derivative will be very illogical. है ना, तो ये नहीं आ सकता. Mundane नहीं आ सकता. What is mundane? Mundane is something which is very regular, run of the mill, एकदम जिसको हम कहते हैं ना कि this is so mundane, the mundane routine of a school teacher. मेरी भी लाइफ आजकल बड़ी mundane हो गई. कोई वेकेशन नहीं है, बस वही ऑफिस घर, mundane, very regular. Okay, boring in a way, without any change or excitement. Okay, all right, so ये नहीं हो सकता. Answer B, beta. Next question. Yes, what's the answer? Although visitors initially may find touring the city by subway to be dash, they're pleased to discover that subways are an inexpensive and dash way to get around. To get around a place मतलब उधर घूमना, उसको एक्सप्लोर करना. तो ये कॉन्ट्रास्ट बताता although जो है, although, though, on the contrary, however, despite, in spite, ये सब words जो है ये contrasting words है. और आपको समझ में आ जाएगा कि जो दोनों क्लॉजेस हैं वो बहुत ही contrasting टाइप के होंगे. तो कहता है कि भले विजिटर्स को इनिशियली ऐसा लगता है
कि टूरिंग द सिटी सबवे के थ्रू, जो नीचे नीचे के जो रास्ते होते हैं उनके थ्रू जाना थोड़ा अजीब हो सकता है. दे आर प्लीज. यहां पे मुझे नेगेटिव वर्ड चाहिए नो मैटर व्हाट. इसको कहते हैं विजन होना. इसको कहते हैं द राइट अप्रोच. You'll have to think, you'll have to do a kind of pre-processing before you jump to the options. Otherwise, on what grounds are you eliminating the options? You getting me? You have to have a clear framework in your mind. So here they are pleased to discover. अब वो खुश हो गए कि सबवे क्या है, इनएक्सपेंसिव है एंड डैश वे है. यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज ये पूरा सेंटेंस सबवे की तारीफें करेगा. सो फर्स्ट ब्लैंक में समथिंग नेगेटिव, सेकंड ब्लैंक में समथिंग पॉजिटिव रिलेटेड टू सबवे. नाउ लेट्स इवैल्यूएट. वेस्टफुल, एक्सपेंसिव एंड जेनरस. ये तो देखो यहां तक तो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव तो है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द सिमेंटिक्स, इट्स अबाउट द वर्ड सेंस. जेनरस कोई जगह थोड़ी हो सकती है, कोई रास्ता थोड़ी हो सकता है. जेनरस तो लोग होते हैं ना, लार्ज हार्टेड, मैग्नानिमस पीपल, शेयरिंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ पीपल, वो जेनरस होते हैं, राइट? तो आप सबवे को कैसे जेनरस बोल सकते हो? दैट्स रॉन्ग. वैसे वेस्टफुल, सबवे वेस्टफुल नहीं हो सकता. ट्रैवलिंग बाय और टूरिंग द सिटी थ्रू सबवे would be wasteful, but then does not make much sense. A option तो नहीं. Daunting is something which is challenging, or something that can be like, instilling fear in you. Daunting. Okay. Triggering fear हो सकता है फर्स्ट ब्लैंक में. They are pleased to discover that it's inexpensive and efficient. Why would anyone be daunted by subways? Because it's under the main roads or the base of the city. So as a tourist, I think it is very risky. I may fear for my life. I don't know about those places. They might look like a little dark and dingy, right? तो इसलिए daunting लग सकता है आपको. Initially visitors को daunting लगता है, but then they feel यार ये तो बहुत ही efficient है. यहाँ तो ज्यादा traffic नहीं है, इसकी तो connectivity बढ़िया है. This is saving our time and money and efforts, energy, right? This looks like a very good option. Extravagant, prohibitive, nahi, I don't think so. Extravagant would not fit in. You can become extravagant, but traveling through a subway, why would it be extravagant? I don't think so. Extravagant का मतलब क्या होता है? जब आप extravagant simply means spendthrift, बहुत ज्यादा खर्चा करना. Convenient, solitary. Convenient तो एक पॉजिटिव वर्ड है जो फर्स्ट ब्लैंक में नहीं आ सकता. सो ऑप्शन डी इज अगेन आउट. ठीक है, बी इज द आंसर. चलिए लेट्स अटेम्प्ट दिस. हाँ जी. What do you think should be the answer? Now, there might be many words that you don't know. And I deliberately gave this to you so that you realize the importance of vocabulary. And the second objective was to teach you these words, which are really high frequency words. Yes, so what's the answer, class? Okay. Once his integrity had been dashed, the mayoral candidate was quick both to dash these attacks and to issue counter attacks. So we're talking about attacks. We're talking about a mayor. तो मेयर साहब हैं, उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया होगा, है ना? उनकी इंटेग्रिटी को अटैक किया गया होगा. फाइन. तो यहाँ पे कुछ अटैक टाइप का वर्ड आना चाहिए.
तो फिर एक बार उन पे अटैक हुआ, तो ये जो बंदा था, ये मेयर तो नहीं थे, मेयरल कैंडिडेट थे, ही वाज क्विक बोथ टू डैश दीज अटैक्स। ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, अब तुम पे कोई अटैक करेगा तो तुम उन अटैक्स का सामना करोगे, मे बी यू विल काउंटर दोज अटैक्स, है ना, यहाँ पे कुछ काउंटर टाइप का वर्ड आ सकता है, एंड टू इशू काउंटर अटैक्स एंड द नेक्स्ट थिंग इज अटैकिंग द पर्सन बैक। ओके, ऐसा ही कुछ हो सकता है, और तो कुछ ऑप्शन बनते नहीं है, एक बार देखते हैं। Once his integrity had been debunked, debunk कोई चीज हो रही है मतलब रिजेक्ट हो गई, डिस्प्रूव हो गई। His theory was debunked due to lack of evidence, तो debunk यहाँ पे फिट नहीं होगा, ठीक है। बट्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना, ये ऑप्शन इज आउट, डज नॉट मेक सेंस। रिस्टोर्ड, इंटेग्रिटी उसकी रिस्टोर हो गई, ओके okay? तो इन्होंने क्या कर दिया, रिकमेंस कर दिया अटैक्स। रिकमेंसिंग अटैक्स वुड नॉट मेक सेंस, वर्ड वाइज वर्ड सेंस भी जरूरी है, किस वर्ड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल लॉजिक भी नहीं बैठ रहा। रिवोक, रिवोक इज टू कैंसिल समथिंग, relinquish is to give up something, ये भी नहीं बैठ रहा। impugn is to attack, often verbally, इट्स नॉट अ फिजिकल अटैक, कोई आप पे फिजिकल हमला करता है उसको इम्प्यून नहीं बोलेंगे, बट देन यस इट्स लाइक यू नो somebody tries to attack you through their words, right? They are challenging your integrity, they are questioning your moves, so that is impugning, right? Verbally attack। repudiate क्या होता है, to repudiate is to reject or disprove something, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे, once his integrity had been attacked, he rejected these attacks or disproved these attacks or countered the attacks, okay, and issued counter attacks। Makes good sense, the delta is the right answer। आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन 4, लेट्स डू इट क्विकली, इट्स अ वेरी इजी वन। चलो ये तो इजी है, कर ही लोगे। देखिए क्लास, आपके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वही उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, सो आई हैव नॉट टेकन दैट अप। वैसे भी अगर आपने ग्रामर पढ़ी नहीं है, मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करा भी दूं, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है ना। यस यस यस, दे आर सिनोनिम्स। Excessive secrecy tends to dash excessive curiosity and thus serves to dash the very impulses against which it guards। आप जितना ज्यादा किसी चीज को छुपाते हो उतनी लोगों में क्यूरियोसिटी बनती है कि क्या है, क्यों छुपा रहे हो, क्यों छुपा रहे हो। घर में मम्मी कुछ खाना पका रही है, इमेजिन करो, and if she is like not letting you come into the kitchen and she's hiding and you come, you force in and then वो बर्तन ढाक लेती हैं और तुम्हें कुछ दिखाती नहीं है, तो तुम उतने इंट्रीग हो जाओगे, ऐसा क्या है यार, क्या बना रही हो, फिर तो तुम पीछे ही लग जाते हो। तो बेटर होता मम्मी ऐसी कुछ छुपाती ही ना ज्यादा, तो तुम शायद किचन में आते भी नहीं, है ना। सो वो यही बात हो रही है यहाँ पे कि जितना ज्यादा तुम सीक्रेसी करोगे, हद से ज्यादा सीक्रेसी से क्या होता है, इट इंक्रीजेस क्यूरियोसिटी and thus serves to dash the impulses against which it guards। Again this will be like, और उससे क्या हो रहा है कि और आपके impulses बढ़ेंगे कि मैं देख लूं इसमें क्या है ना। हम चाह रहे हैं कोई देखे ना तो इंसान और देखने की कोशिश करेगा, that's what it is saying। D delta, invite excessive curiosity and serves to provoke the impulses।
इनहिबिट नहीं होगा, लॉजिकली सेटिस्फाई नहीं होगा, कंपेल, डिराइड इज टू मॉक समवन, रिडिक्यूल देम उनका मजाक उड़ाना, सी डज नॉट फिट, आंसर इज डी डेल्टा। एक एक ब्लैंक, अब ये दो क्वेश्चन है, फटाफट करिए, चलिए ठीक है, लेट्स मेक इट फास्ट and then we will move to the next question types. I think they are easy ones, provided that you know the words. If you don't know the words, then you will be lost. All right. Are we done? Okay. Sixth, the governor elect. Yes. A. अच्छा. D. बड़ा कंफ्यूजन है भाई. देखते हैं. वोकैबुलरी का गेम है. वर्ड्स आते हैं तो ठीक है, बट ठीक है, आप अभी भी कितने वर्ड्स आपने आज सीख लिए, इडियम सीख ली, ठीक है. द गवर्नर इलेक्ट वाज हाउंडेड. व्हेन यू आर हाउंडेड, यू अबाउट पीपल अराउंड यू, ओके, ऑलमोस्ट चोकिंग यू, आपके आसपास घूम रहे हैं, सराउंडेड बाय पीपल एंड hordes of people. They are hounded by a group of dash lobbyists and others hoping to gain favor with her administration. ऐसा ही आज का यही जमाना है. आपके साथ जो लोग रहते हैं, चेक करिए कहीं वो किसी मतलब से तो नहीं है आपके साथ. यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, कि ये जो गवर्नर इलेक्ट है, ये जो इलेक्ट होके आई है, अब इनके आसपास जितने भी लॉबिस्ट और जो भी लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू गेन फेवर. वो फायदा उठाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा भला हो जाए. तो ऐसे लोगों को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करेगा? फेसिशियस? बिल्कुल नहीं. फेसिशियस क्या होते हैं? फेसिशियस होना मतलब सीरियस सिचुएशन में भी बहुत ही ह्यूमरस होना, बड़े बड़े मुद्दों को आप एकदम लाइट वे में ले रहे हो, एंड विच इज वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि अरे यार, हर जगह वॉर्स हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, क्या रहा है पूरी दुनिया में, एंड somebody says हाँ तो अच्छा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी, हाँ हाँ हाँ. सो ये दिस इज नॉट फनी, दिस इज बैड ह्यूमर. सो facetious approaches के बहुत भारी भारी मुद्दों पे भी आप जब बहुत ही फ्रिवलेस सा और फ्लिपेंट सा एटीट्यूड रखते हैं, सिली एटीट्यूड कर रहे हैं, सिली ह्यूमर क्रैक कर रहे हैं, सीरियस सिचुएशंस पे यू आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सीरियस, दैट इज facetious. बिल्कुल नहीं हो सकता. abstruse is obscure, which is something which is hard to understand, difficult or hard to understand. ये भी नहीं हो सकता. फॉनिंग इज द राइट आंसर. फॉनिंग का मतलब होता है बीइंग वेरी सर्वाइल, सर्वेंट लाइक एटीट्यूड होना, जी हुजूरी करना, बूट लिकिंग करना, एप्पल पॉलिशिंग करना, साइकोफैंट्स जो होते हैं, ठीक है ना, दे आर फॉनिंग. सैकरीन is a kind of a substance which is sugary. It's like it's a kind of a sugar, saccharine. आपने कई प्रोडक्ट्स पे देखा होगा, उसमें सैकरीन होता है. तो सैकरीन सही नहीं रहेगा यहाँ पे ऑब्वियसली. मेटाफोरिकली सैकरीन हम चुन लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो मीठी बातें करेंगे ना ऑब्वियसली, मैडम जी है ना, तारीफें करेंगे, बट वी आर फॉनिंग विच फिट्स बेटर, सो विल गो विद दैट. I have always admired Seymour, ये नाम है, Seymour's dash.
I've never seen him rattled by anything. When you're rattled, आप ना हिल जाते हो. ओके जब आपको पता चल रहा है that your best friend was a snake in the grass, you get rattled by it. Like ये क्या हो गया? Devastated, हिल जाना, परेशान हो जाना, rattled. But this person never gets upset, frustrated, angry, is so controlled, is so calm. ठीक है तो क्या होना चाहिए? इस क्वालिटी को क्या बोलेंगे? Seymour's dash, aplomb, because aplomb means composure, being very calm and composed. So people who are calm and composed obviously won't be rattled by anything. Confluence, con मतलब together, flu मतलब flow. बिल्कुल irrelevant word है. Confluence, everything flowing together. नहीं बैठेगा यहाँ पे. Propriety, proper से याद रखो. Proper behavior. While this is a positive word, but then uh, परेशान ना होना किसी चीज से, रैटल्ड अप ना होना, वो वाली बात इससे कन्वे नहीं होगी. कंपंक्शन इज अ सेंस ऑफ गिल्ट, स्पेशली आफ्टर रॉन्ग डूइंग. द स्क्रूपल्स ऑफ योर कॉन्शियंस, तुम कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं है. यू हैव नो कंपंक्शन, नो सेंस ऑफ गिल्ट, नो स्क्रूपल्स ऑफ कॉन्शियंस जो कहते हैं तुमने गलत किया. अंदर से एक आवाज आती है ना, नहीं यार ये तो सही नहीं है, ये दिस इज कंपंक्शन. आंसर ऑफ कोर्स अप्लॉम्ब. ठीक है. So I hope you have been enjoying the session so far. I can see many students have joined us now. तो gradually join करते रहते हैं, live attend करो, best रहता है. But जो भी आपने miss किया है, make sure you cover that up. Okay. Now we come to para summary. तो पैरा समरी का ये क्वेश्चन है. आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और आपको वो ऑप्शन चुनना है जो पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया है, मेन आइडिया, उसे कवर करे. बाय द सेम टाइम it should try to cover all the important ideas that have been covered in the passage. There will be some options जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, या तो इनकम्प्लीट होंगे, सारी बातें कवर नहीं करेंगे, या फिर कुछ डिस्टोर्शन कर देंगे आइडिया में, या फिर कुछ फैक्ट्स गड़बड़ कर देंगे, या फिर कुछ आउट ऑफ स्कोप चले जाएंगे. तो ये सारी पॉसिबल errors हो सकते हैं that you will observe in the options. Let's read this in a calm way. Come on class, let's do it. We can do it. हाँ जी, done. I think it's an easy one. Yes, what's the answer? Yes, equanimity कह सकते हैं is a synonym of aplomb. Yes. चलिए फटाफट आंसर भेजिए, इतना भी लंबा नहीं है, तो अभी मुश्किल नहीं है.
ओके, ऑलराइट, चलिए लेट्स डिस्कस. Caste is not the only arena where the insidiousness of inequality impresses itself with an unrelenting force. जो inequality है वो सिर्फ कास्ट में नहीं आती. inequality हर जगह है, बहुत सारे मुद्दों में है, सिर्फ कास्ट में नहीं है. ठीक है. Insidiousness क्या होता है? When something is insidious, वो चुपके से it creeps in, those negative things that develop but in a way that you don't observe them. ये कब हो गया? ठीक है. So the insidious addiction that you get from social media, okay, insidiousness of inequality impresses or forces itself with an unrelenting, unstoppable force. It not only inflicts injuries upon agents but also gives the politics that results a competitive edge. ठीक है भाई. Injuries, it's very injurious. ठीक है. And it also affects the politics. There are other areas as well, most powerfully gender. So it's telling you about now the gender inequality. ये जो inequality है वो सिर्फ caste based नहीं होती, gender based भी होती है. But I would like to suggest that the subtle psychological ramifications of inequality and humiliation inflect social life in India in the most unexpected places. Ramifications होते हैं effects, consequences या फिर implications, inferences. तो ये कहता है कि इनइक्वालिटी के ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और बहुत ह्यूमिलिएशन मिलता है इनइक्वालिटी से. व्हेन यू आर नॉट ट्रीटेड लाइक एन इक्वल, इट इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग. एंड दिस इज देयर इन आवर सोशल लाइफ ऑल अराउंड इन इंडिया एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस. Alexis de Tocqueville very perceptively argued that the onset of equality as a social condition could in some sense be best gauged by the relations between master and servants in any given society. अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी किसी भी सोसाइटी में, ये एक थिंकर हैं बहुत बड़े एलेक्सिस, तो उन्होंने बोला, इज वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट एंड इवन अ फिलोसोफर, तो उन्होंने बोला कि आपको इक्वालिटी चेक करनी है, अगर क्या इक्वालिटी आ गई है क्या सोसाइटी में कि नहीं, तो आप मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को स्टडी करिए किसी भी सोसाइटी में. The onset of democracy will not prevent the existence of these classes. In some senses, there will always be social superiors and social subordinates. और उन्होंने ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी आ गई है तो ये क्लास सिस्टम चला जाएगा. There will always be some people who will be superior in the social strata, while others will be subordinates or inferior to them. जितने ज्यादा मास्टर्स एंड सर्वेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा मतलब डिवाइड है और उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी है. ठीक है. ओके. सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है इस चीज को. Inequality in society is limited to material aspects and does not significantly affect social interactions or the psychological well-being of individuals. No, तो कह रहा है कि सोशल क्लासेस में हर जगह है. ठीक है. और मटीरियलिस्टिक ही है ऐसा तो कहीं भी नहीं दिया है. दिस इज factually wrong. This is a distortion. A is not the answer. The impact of inequality is subtle and pervasive. Yes, we can say it is subtle because it calls it insidious, affecting various aspects of social life. हाँ जी, ये भी दिया है. Including the dynamics between social classes as illustrated by the relationship between masters and servants. Looks good. ये कहता है कि इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट परवेजिव है, हर जगह है. परवेजिव है, यूबिक्विटस है, रैम्पेंट है. इट इज सटल, इट्स इनडायरेक्ट, but it's affecting every aspect of social life. Now, when it says every aspect of social life, this clearly says that it is not limited to only the castes. This also affects the gender, though it does not directly mention gender, but ये cover हो जाता है इसमें. Dynamics between different social classes. स्पेशली आप मास्टर्स और सर्वेंट्स को देख लो तो ये ठीक लग रहा है मुझे. I'll put a small tick. Alexis de Tocqueville argues that democracy eradicates social classes. आगे मुझे पढ़ना नहीं, आगे मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि ये यहीं पे गलत हो गया. उसने बोला था कि डेमोक्रेसी, लास्ट लाइन में उसने बोला था कि डेमोक्रेसी अगर होगी भी तो भी
ऐसा नहीं है कि क्लासेस खत्म हो जाएंगी, क्लास सिस्टम तो रहेगा, सुपीरियर और इंफीरियर हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। Inequality is predominantly a result of the gender disparity, with other forms like caste playing a minor role in shaping social dynamics. Again, ये कहाँ बोला उसने? उसने कहाँ बोला कि कास्ट तो बहुत ही माइनर रोल प्ले कर रहा है और मेजर तो जेंडर ही है? ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ओके। अग्रीड नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि आपको बस ये देखना होगा कि आपकी जो स्पीड है, आपका जो एक्यूरेसी है, वो जितना हाई होगा उतने ही ज्यादा मार्क्स आप फेच करोगे। तो थोड़ा सा देखकर इवेलुएट करके आप जब अपने आंसर्स मार्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एज ओवर अदर्स। बी इज द राइट आंसर। लेट्स डू दिस। क्लास देखो, किसी भी एग्जामिनेशन, आईआईएम का आईपी मैट हुआ, आई एम हियर रेफरिंग टू आईपी मैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एग्जाम्स, अदर्स में भी ऐसा होता नहीं। पैरा समरी पहली बार आया, तो ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल विद दिस, राइट? चलिए, प्रैक्टिस दिस सीरियसली, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Yes, are we done? Done with this? I think it's very easy. Okay. Deep fakes. We all know about deep fake. Yeah. The awareness to hogi, obviously. They refer to synthetic or doctored media, digitally manipulated and altered to convincingly misrepresent or impersonate someone using a form of AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी हुआ ना हमारे साथ में कुछ एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियोस आए, विच इज सो डिस्टर्बिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि किस तरह से वो कंप्लीटली ट्वीक कर देगा, मिस रिप्रेजेंट कर देगा, किसी को इम्पर्सोनेट भी कर सकता है ना? Impersonation, I hope you understand. Last month, the government directed all platforms to comply with the IT rules and mandated, compulsory बना दिया, companies to inform users in clear and precise terms about prohibited content. ठीक है, they came up with some IT rules, उन्होंने बोला कि आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कंटेंट प्रोहिबिटेड है। The government talked tough with social media platforms after several deep fake videos targeting famous personalities sparked public outrage and raised concerns over the weaponization of technology for creating synthetic content and harmful narratives. अब आप इमेजिन करिए कि एआई जिस लेवल और जिस स्पीड पे बढ़ रहा है और उससे क्या क्या नहीं किया जा सकता, कैसा भी वीडियो नहीं बनाया जा सकता, और इन वीडियो से ऑलरेडी देयर सो मच ऑफ आउटरीच गोइंग ऑन, सच हार्मफुल narratives can be presented using this technology. So the government has already taken some stringent measures to control this. Okay. A option: deep fake solely used for entertainment.
led to government regulations requiring social media platforms to clearly label all synthetic media for user awareness. But this is not mentioning anything negative about deepfake. Whereas the passage is telling you about the harm, the harmful potential that deepfake has. Right? So ये तो बिल्कुल neutral वे में बोल रहा है solely for entertainment. It's not just entertainment. Come on, it has a negative intention which is missing. So A is out. The government has reacted to the widespread use of deepfakes by imposing strict regulations on all platforms, mandating clear user information about such content, and addressing the potential misuse of AI in creating harmful narratives. Wow. Beautiful, I think, right? टोनालिटी तो आपको ऐसे ही समझ में आ रही है ना जो अच्छा if it's given in the question see tones तो you will understand जैसे इस passage में जो tone आप कैसे identify करोगे clearly it is telling you what actions the government has taken to combat the negative effect of deepfake but then it is you can sense that that the passage is also talking about the poison or the weaponization of this technology and the potential harm that it has right तो उस हिसाब से आप देखोगे कि टोन डेफिनेटली आपको टुवर्ड्स डीप फेक क्या है ऑथर की काफी नेगेटिव स्पेसिफिक एलिमेंट्स के खिलाफ की तरफ भी टोन पूछी जा सकती है राइट Deepfakes have been universally accepted as a harmless form of AI technology. No, not possible. Seize out. The government's intervention in regulating deepfakes was unnecessary and has led to a suppression. No way. बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कोप और बिल्कुल फैक्चुअली बल्कि कॉन्ट्रेरी ऑप्शंस आ गए सो आंसर आपका क्या हो जाएगा क्लियरली बी बीटा द लास्ट क्वेश्चन ऑन समरी एंड देन वी विल टेक अप अ पैसेज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज हाँ जी come on quick speed up you have to share your answers with me come on yes I think everybody's through by now okay डिस्कस करते हैं फाइन फाइन The battle against obesity and weight gain has seen multiple fronts, from scientific research on metabolism and the microbiome to public health studies highlighting the role of social factors like poverty. So, ये जो बैटल है अगेंस्ट ओबेसिटी वो अलग अलग फ्रंट्स पे खेली जा रही है ये बैटल एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म इंडिविजुअल का व्हाट रोल डज दैट हैव टू प्ले देन वी आल्सो हैव अदर एस्पेक्ट्स लाइक पब्लिक हेल्थ स्टडीज जिसमें सोशल फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी स्टडी किया जाता है जैसे पॉवर्टी
जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, जो लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, वो सिर्फ ब्रेड खा लेते हैं, एक वड़ा पाव खा के चला लेते हैं. सो दैट्स नॉट अ हेल्दी फूड, दैट्स नॉट अ बैलेंस डाइट. They eat all starchy food, they don't get fiber, they don't get vegetables, they don't get fruits, right? So they become obese, right? तो ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे. While excess weight is known to come with health risks, research also acknowledges the possibility of being overweight yet healthy. अब एक और बात आई, ज्यादातर तो एक्सेस वेट होता है तो हेल्थ रिस्क होते ही होते हैं, बट देन ऐसा भी हो सकता है, रिसर्च से पता चल रहा है, there's a possibility that you can be overweight but at the same time you can be healthy also. However, but societal stigma surrounding obesity often leads to associated mental health issues. But people shame you for being fat, right? There's a lot of stigma associated with being fat, and so it has psychological implications too. The recent breakthrough in treating obesity is the development of glucagon-like peptide 1 agonists. कोई substances हैं, बस इतना समझ लो. Initially used for type 2 diabetes, GLP-1 agonists like semaglutide have shown promise in combating obesity-related health issues, marking a significant advance and causing a sensation in both the medical field and mainstream media. अब एक चीज पता चल रही है, रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू हुआ है. बहुत ही ब्रेक थ्रू होना मतलब कोई बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी होना, राइट? कि वो ये बोलता है, मतलब इन ट्रीटिंग ओबेसिटी के एक डेवलपमेंट हुआ है एक ऐसे सब्सटेंस का जो बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है, which can actually control obesity. Okay, and this is a big advance, and this is causing all the sensation. Okay, very sensational discovery. So obesity is predominantly a result of individual lifestyle choices, and recent medical advances have rendered societal and mental health factors irrelevant in its treatment. Quite a distortion. It is saying that research has acknowledged, it is saying that we consider this, that there are multiple factors that cause obesity, not just your lifestyle, individual lifestyle, and that, you know, health factor, other factors are irrelevant. ये कहीं नहीं बोला गया, this is wrong. The complexity of obesity is underscored. Underscored मतलब highlighted by its ties to both physiological factors and societal stigma. ये बात तो सही है, अच्छे से कवर कर रहा है कि societal stigma एक बड़ा प्रॉब्लम है. This is a complex issue. Okay, फिर आपका physiological factors तो है ही है. With recent medical breakthroughs offering significant but not comprehensive solutions. Recent medical breakthrough के बारे में बोल दिया. Now, not comprehensive इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि this is just one aspect of it. There are multiple aspects also involved, and so far this only looks promising. It is not proven yet that this is going to yield us 100% results. So I put a small tick here. Despite the societal stigma and mental health issues associated with obesity, the medical community disregards these factors. ये कहाँ बोला कि डिसरिगार्ड करते हैं, तो कहीं नहीं बोला, गलत. GLP-1 agonists have completely solved the obesity crisis. No यार, अभी कहाँ से सॉल्व कर लिया, अभी तो बस वो आया है, अभी तो वो रिसर्च में पता चला है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका फिर रिजल्ट आएगा, अभी तो बहुत लंबा लीप मार लिया. डी डेल्टा गलत, आंसर डी बीटा. ठीक है ना? यस युवराज, कनन, तनिष्क, birth, सबका सही आंसर. Well done, people. Good. So far we are going strong. I am good to see that those people who had joined me at the 0th minute are still here with me solving all the questions. I really appreciate your focus, your determination, your stamina. Well done. Keep it up. And just the last lap, we just have to solve a passage. Let's do this. Okay, I would like to rather take up a more interesting one first. Let's do this passage too. बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है, जरूर करिए. 2 पैसेजेस हैं बस, फटाफट करिए. प्लीज रीड इट फास्ट. देखो, पैसेज सॉल्विंग के लिए पहले मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान दूंगी, ज्यादा थियोरी नहीं.
ओके, अभी वक्त थियोरी का नहीं, बस अब तो प्रैक्टिस का ही वक्त है। बट पैसेज जब पढ़ते हो ना, तो ऐसे पढ़ो कि जो भी इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो दिमाग में बिठाते चलो। ऑनलाइन पेपर है, अंडरलाइनिंग तुम कर नहीं सकते, ठीक है? ऐसे पढ़ो, ऐसी क्लैरिटी आनी चाहिए कि हर पैराग्राफ के बाद में आप एक पॉज लेके एक लाइन में उसको समराइज कर लो। आपको एक तरह से रिवीजन हो जाता है मेंटली, और चीजें दिमाग में बैठ जाती। देन जब तुम पूरा पैसेज पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें एक मेन आइडिया क्लियर होना चाहिए कि पूरे पैसेज का क्रक्स क्या था, इसका निचोड़ क्या है। So if you know the main idea and if you know the important ideas associated with it, you can definitely crack it. ठीक है ना? तो ये समझो कि क्लैरिटी हो गई। अब क्वेश्चंस में एलिमिनेशन करना है। पहले तो अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर हर एक ऑप्शन को कोशिश करो उसमें कमियां निकालने की। यार ये सही तो ठीक तो लग रहा है, बट ये दो तीन वर्ड्स ना थोड़े पंगे वाले हैं, ये तो पैसेज में नहीं दिया था, है ना? यार ये बात तो हुई ही नहीं है, ये बात तो गलत लिख दी है। इस तरह से इवैल्यूएट करते चलो, जो ऑप्शन में कोई गलती नहीं होगी। मैं तो आपको हर एक ऑप्शन समझाऊंगी, आई हैव ऑलवेज डन दैट, राइट? बट अभी एज यू रीड द पैसेज, नंबर वन, मेक इट अ लिटिल फास्ट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एंड नंबर टू, be very very precise, practice elimination techniques, and I'm sure you will be able to do it. Now I step aside, please read this well. Through, done with the slide, read it, come on, I need a thumbs up. Yes, done it. Yes, of course, idioms and phrases आएंगे। सैंपल पेपर में दिया हुआ है ना युवराज। युवराज, अब मैं अगर एक वोकैबुलरी सेशन कर भी लूंगी ना आपके साथ में, अब पॉसिबल नहीं है। एक काम करो, इफ यू रियली नीड अ वोकैब सेशन, मेरे कुछ वोकैब शॉर्ट्स डलते हैं इसी चैनल पे, वो देखो। प्लस मैंने वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज लगाई हुई है। बीच बीच में जहां जहां भी मैंने वोकैबुलरी के सेशन किए ना, तुमको बस 10 मिनट लगेंगे, पूरी प्लेलिस्ट खोल के देख लो। मैंने सेशंस कराए हैं इस पे, तो आई थिंक वो सेशंस आप देख लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है युवराज? ओके, चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अ वेरी शॉर्ट पैसेज, बस दैट्स इट, ये खत्म। ये पढ़ लीजिए एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। Done, finished reading? Yes, people. If you're through, I'm sure you would like to attempt the questions. Yes? Okay. Okay, are we done? Can I take you to the question slide, please?
Say yes. Yes? Okay. The first question. Write the question number and mention the option. Okay? Share your answers. Hanji, done? Okay, question number two. Answer भेजिए जल्दी फटाफट. Send your answers. Come on, quick. Question number two. This can be slightly tricky. Read it carefully, evaluate the choices, eliminate karte jao. That way you will be very accurate and precise. Okay? Yes, I guess you're through with this one. Yes. Okay, many of you have shared the answer. Let's move to the third question. आप तो आंसर भेजो, आप कंफ्यूज हो तो भी आप आंसर भेजो, कोई टेंशन नहीं. Done? This is an easy one. I think this is a scoring one. You should be able to crack this one, class. Okay, and finally, the last question of this passage. This is the last question. Yes. Come on, people. I'm eagerly waiting for your responses.
Are we through with this? Yes, so how did you find the passage? I'm sure you enjoyed reading this. This was a very nice read, I must say. मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा. इसको पढ़ के मजा आया. और हाँ, it prompted me to think कि ऐसा क्यों हो रहा है. All right. So let's now move towards studying the passage together. Let's read the passage together. Okay. Yeah. In an uncanny means थोड़ा सा mysterious, थोड़ा अजीब, थोड़ा eerie. In an uncanny twist of events, it appeared as though reality was imitating art, specifically the art of SRK's latest cinematic venture, Donkey. तो जैसे ही मैं कोई बॉलीवुड फिल्म वगैरह पे पैसेज पढ़ती हूँ, मैं बड़ी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आने लग जाता है, फाइंड इट रिलेटेबल. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि रियलिटी जो है वो आर्ट को इमिटेट कर रही है. नॉर्मली तो आर्ट रियलिटी को इमिटेट कर रहा है, इस बार ऐसा लग रहा था रियलिटी जो है वो आर्ट को इमिटेट कर रही है. और किसके बारे में बात हो रही थी? डंकी के बारे में, जो एसआरके की लेटेस्ट मूवी है. The film's premiere, which narratively explores the journey of four illegal migrants from India who managed to infiltrate the UK, coincided with a real life incident. तो जैसे ही मूवी का प्रीमियर हो रहा है, and this movie is essentially about illegal migrants. इंडिया के 4 लोग इस मूवी में बताए गए हैं जो इलीगली माइग्रेट होते हैं यूके जाने के लिए. ठीक है. एंड दे एंड रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है तभी. तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट क्या है, अब वो बता रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट जो दुबई से ओरिजिनेट हुआ था एंड डेस्टिन्ड फॉर निकारागुआ वाज इंटरसेप्टेड, उसे रोका गया ड्यूरिंग अ लेओवर इन फ्रांस. फ्रांस के थ्रू होते हुए वो निकारागुआ जा रहा था. The plane was carrying 303 Indian passengers. The passengers' intended destination was speculated to be the Central American nation, with the ultimate goal of unauthorized entry into either the US or Canada. तो जैसे ही एसआरके की मूवी डंकी प्रीमियर होती है, वैसे ही देखा गया कि ये रियल लाइफ में इंसिडेंट हुआ कि एक प्लेन था, उसको इंटरसेप्ट किया, उसको थोड़ा सा बीच में रोका, सीज किया, चेक किया, तो इतने इंडियन पैसेंजर्स थे and they were planning to illegally enter either the US or Canada. This method of travel is referred to in the human trafficking industry as a donkey flight, which happens to be the central theme of SRK's film. The term donkey, a colloquial होता है जो डे टू डे कॉन्वर्जेशन में जैसे बोला जाता है, colloquial pronunciation of donkey. कई बार सुना यार मैंने डंकी. डंकी कुछ नहीं होता, डोंकी होता है, राइट? बट लोग बाग डंकी बोलते हैं. तो वो डंकी has become a metaphor for illegal migrants from India. All the people who are illegal migrants from India in the human trafficking industry, they are called donkey. ठीक है. These individuals resort to desperate measures to escape their homeland, driven by the hope of a better life elsewhere. In the year 2023, there was a five-fold increase from the previous year in the number of undocumented or illegal Indian migrants apprehended or captured in the US. These individuals had managed to reach the US via Central America and Mexico, totaling to this. कैसे मर रहे हैं आप देखो यूएस जाने के लिए, और यूएस जाके क्या करेंगे वो पता नहीं. But the point is this, look at the number. So this says that कि donkey word of course donkey से आया, इन लोग को donkey बोला जाता है. ठीक है. और ये नंबर बढ़ता जा रहा है. It's an astonishing, a staggering number which is around 96,000. ये सारे लोग हैं जो इलीगल तरीके से यूएस में एंटर हुए और वो बल्कि पकड़े भी गए. In what has come to be called the Great Indian Diaspora, there are over 18 million Indians who have legally migrated to various foreign countries, making India the world's largest remittance economy, topping up to an estimated itna in 2023. अब सुनो,
एक चीज यहाँ पे है डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? किसी भी नेशन के लोग जब दूसरी कंट्रीज में जाके सेटल हो जाते हैं तो उनको डायस्पोरा बोलते हैं। तो आप देखोगे कि इंडियंस कहाँ नहीं है पूरी दुनिया में। मॉरिशस, दुबई, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, हर जगह इन ग्रेट नंबर्स, राइट? तो ये तो इससे तो क्या हो गया है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेमिटेंस इकोनॉमी बन गई। व्हाट इज रेमिटेंस? When a migrant sends back money to his family living in India, right? That is called remittance. Okay. So if my brother lives in Dubai, he works there and he sends us money, that money will be called remittance. Okay. तो ये तो ठीक है। इंडिया सबसे बड़ी रेमिटेंस इकोनॉमी बन गई, सब तो क्लियर है। इतने सारे लोग इंडिया हर साल लीव कर रहे हैं ताकि वो बाहर अब्रॉड सेटल हो जाएं। 2.5 मिलियन इंडियंस, माय गॉड। बट ये कैसे जाते हैं? डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जाते हैं। हाउएवर ये एक अनअकाउंटेबल नंबर है जो लोग इलीगली माइग्रेट करते हैं और डंकी रूट से जाते हैं। दिस रेजेस द क्वेश्चन, अब बहुत बड़ा सवाल उठता है, व्हाई? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है एंड वी बोस्ट अबाउट इट कि हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हम फिफ्थ लार्जेस्ट है, हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। तो फिर क्यों ऐसा है दैट सो मेनी पीपल आर लीविंग देयर कंट्री, रिस्किंग एवरीथिंग? व्हाई डू दे हैव दिस ड्रीम ऑफ better prospects in distant lands, and in doing so they give all Indians the tag of being suspect illegals? और वो तो कर जाते हैं जो उन्हें करना है, बट सारे इंडियंस को ये टैग मिल जाता है कि आप क्या हो? इलीगल हो, इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट हो। What motivates these donkeys, many of whom come not from the so-called Bimaru regions but from prosperous states like Gujarat? अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? और सरप्राइजिंगली we all know that there are some Bimaru states. Bimaru states वो हैं states where there's a lot of population, where there's no development, where there's a lot of poverty. Like some कहते हैं शायद बिहार है, झारखंड है, यूपी है, एमपी है, आई थिंक ये कुछ ऐसे कुछ स्टेट्स हैं। ओके, बट गुजरात जैसा प्रॉस्परस स्टेट, वहां से भी कई लोग जा रहे हैं वाया द डंकी रूट। Donkeys are said to be dumb animals, but our donkeys pose a puzzle that baffles or confuses, bewilders those of us who continue to believe in a Bharat, be it never so great. डंकी तो वैसे डम एनिमल्स होते हैं, हमारे डंकी जो उन्होंने बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया है, स्पेशली हम लोगों के सामने जो यहाँ पे रह रहे हैं, बिलीविंग इन भारत, इवन इफ इट्स नॉट सो ग्रेट बट स्टिल इट इज आवर कंट्री एंड वी बिलीव इन इट, राइट? बहुत प्यारा पैसेज, थॉट प्रोवोकिंग पैसेज। चलिए, टाइम टू solve the questions. Which of the following is the most suitable title of the passage? जी बताइए। The impact of SRK's movie Donkey on real life events is a big no. क्यों भाई? Are we talking about, is the entire passage about this? देखो, जब हम टाइटल सिलेक्ट करते हैं ना, तो it must represent the main idea of the passage really well. तो ये क्या हमको ये बता रहा है कि एसआरके की मूवी जो थी डंकी, उसका इम्पैक्ट बढ़ गया है और उसको देखकर लोग बाग डंकी बन रहे हैं? नो ना, तो ऑब्वियसली तो गया। द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इलीगल माइग्रेशन, सो ब्यूटिफुली दिस कैप्चर्स। बट मुझे सी भी अच्छा लगता है, इंडियाज प्रोस्पेरिटी एंड द डंकी रूट फॉर इलीगल माइग्रेशन। सी इसलिए अच्छा लगता है और क्योंकि उसमें डंकी वर्ड आ गया है ना। लेकिन आंसर इज बी। व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड। बिकॉज इट हैज मेंशन्ड द वर्ड पैराडॉक्स, और पैसेज यही एक्सप्लोर कर रहा है। ऑन वन एंड इंडिया is becoming a great superpower in terms of economy के बारे में तो बोला गया clearly है ना, is going to be the third largest economy very soon,
and we take so much pride in it, but at the same time, why then do we have illegal migration, right? यही बात पूरे पैसेज में चली है, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड यही क्वेश्चन पोज किया गया, विच इज अ वेरी पैराडॉक्सिकल थिंग. अगर हम इसकी बात करते तो बस इसे दो टर्म्स को डिसजॉइंट करके लिख दिया है, बट पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इलीगल migration looks like a wonderful choice, hence it's the right one. Great Indian diaspora, a remittance economy, is not mentioning the problem of illegal migration, इसलिए डी नहीं हो सकता. Why does the author mention the line donkeys are said to be dumb animals? देखिए, वो भले ये चीज बोल रहा है सेकेंड लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है, दैट यू मस्ट एडमिट, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये जो डंकीज होते हैं वो भी डम है. ये ऑथर ने कहीं पे भी नहीं बोला कि ये जो डंकीज हैं वो भी डम है. उसने इन जनरल बोला है कि डंकीज तो डम एनिमल्स होते हैं. अब जो ऑप्शन ऐसी बात कर रहे हैं टू आर्ग्यू दैट द डेरोगेटरी टर्म डंकी accurately reflects the true nature of illegal migrants, आई थिंक ये बहुत नेगेटिव हो जाएंगे, ये थोड़े से एक्सट्रीम हो जाएंगे, hence this should not be the right answer, because author has nowhere even suggested that हाँ सही बोलते हो इनको डंकी सच में गधे लोग हैं क्यों जा रहे हैं. नहीं, ऑथर ने बहुत ही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल टोन रखी है. ऑथर ने सिर्फ ये सवाल उठाया है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, बट ऑथर ने ये बात जरूर बोली है कि इन डंकीज की वजह से बाकी सारे इंडियंस जो हैं उनको शक से देखा जाता है. सो एंड व्हाई आर दे कॉल्ड डंकी इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? तो ये एक, इसका मतलब आप उन्हें डंकी बोल रहे हो, राइट? आप लायन तो नहीं बोल रहे, टाइगर तो नहीं बोल रहे हैं, डंकी बोल रहे हो, मतलब देयर इज अ नेगेटिव इमेज. पैसेज हम बस यही समझ सकते हैं कि इनकी नेगेटिव इमेज है, और वो चीज कौन सा ऑप्शन कैप्चर कर रहा है? To emphasize that such derogatory labels contribute to the negative perception of illegal migrants. I would put a small tick here. To suggest that the derogatory term donkey is justified due to the action. Now, author ने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि बिल्कुल सही बोलते हैं इनको डंकी बोलते हैं. तो हम खुद से नहीं सोच सकते, हम खुद से नहीं मान सकते. This is about taking out very calculated inferences. बहुत ही रीजनेबल तरीके से हम इन्फर करेंगे. इन्फ्रेंस कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, और इन्फ्रेंस शुड बी सब्सटैंशिएटेड बाय एविडेंस. हम खुद से सोच लें हाँ गधे हैं इसलिए बोला गधा, नहीं, ऑथर ने जो बोला है उसी में से हमें आंसर निकालना है. To support the idea that illegal migrants should be treated as lesser individuals, no, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि इनके साथ तो गंदा व्यवहार करो, इनको तो अच्छा ट्रीटमेंट देना ही नहीं चाहिए, nothing like that. आंसर P बीटा. Question 3. Which of the following statements is not being said by the author? ऑथर ने क्या नहीं बोला? इट्स अ फेयरली इजी क्वेश्चन. द इंटरसेप्शन ऑफ द चार्टर्ड एयरक्राफ्ट वाज प्योरली कोइंसिडेंटल एंड अनरिलेटेड टू एसआरके's मूवी डंकी. नो, इन्होंने बोला कि उस इवेंट से ऐसा लगा कि एज इफ आर्ट नहीं बल्कि रियलिटी इज इमिटेटिंग आर्ट. सो दे नॉट अनरिलेटेड, क्योंकि इस मूवी की थीम सेम थी, तो ये गलत है. There's no doubt that India is making considerable improvements in its economy, given in the passage. India's poor domestic conditions actually drive away the people from their country and compel them to take the donkey route. There is a misconception prevailing among many Indians that life in these foreign countries are way better than life in India. तो आप क्लियरली समझ रहे हो
कि यार ये मिसकंसेप्शन तो लोगों में है, तभी तो वो बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये दिया तो है पैसेज में, hence it can't be the answer. Coming to see, India's poor domestic conditions actually drive away the people from their country. Now, ऑथर ने ये बोला कि इंडिया एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है एंड इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग नेशन, और तो फ्लरिश हो रहा है और इसकी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो फिर लोग क्यों जा रहे हैं? तो ऑथर ने कहीं ये नहीं बोला कि इंडिया में कंडीशंस अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑथर ने ये नहीं बोला इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। आपको क्या बताना है? नॉट बीइंग सेड। अब जब आप ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए बोलता है कि प्योरली कोइंसिडेंटल है, तो ऑब्वियसली कोइंसिडेंटल मतलब थीम तो सेम है, लेकिन ये कोइंसिडेंस ही तो हुआ ना कि यहाँ पे प्रीमियर हुआ फिल्म का और यहाँ पे रियलिटी में चीजें हो गई। आप समझ रहे हो बात, राइट? अनरिलेटेड इन द सेंस थीम तो सेम है एसआरके की मूवी का से, बट उस मूवी का इससे कुछ लेना देना नहीं है ना, तो ये पैसेज के हिसाब से सही है, बट आंसर ये हो नहीं सकता क्योंकि नॉट बोला गया है। क्लियर है ना आपको? ये भी सही है पैसेज के हिसाब से, सो कांट बी द आंसर। ये होगा आपका आंसर। क्यों होगा? इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि पुअर कंडीशन है इंडिया की, इसलिए लोग जा रहे हैं, जबकि ऑथर ने कहीं पे भी नहीं बोला। इज दिस मच क्लियर? ऑथर ने तो बल्कि सवाल उठाया है कि जब हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो लोग क्यों जा रहे हैं? ठीक, ऑलराइट। And finally, we come to the last question of this marathon, and then we're going to wrap up the marathon today. What is the purpose of the author mentioning the state of Gujarat in the passage? उन्होंने गुजरात स्टेट को क्यों मेंशन किया? To highlight the fact that Gujarat is the primary source of illegal migrants? No. कहीं पे भी पैसेज में ये नहीं लिखा था that majority of the illegal migrants come from Gujarat. So you can't call it primary. To illustrate that even prosperous states like Gujarat contribute to the issue of illegal migration. Yes, that's very nice. ये बताना कि बीमारू रीजन से जा रहे हो तो चलो हम फिर भी समझ लें। प्रॉस्परस स्टेट्स लाइक गुजरात जहां पे बहुत डेवलपमेंट है, पर कैपिटा भी अच्छी, वहां से भी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, सो दैट is raising the eyebrows further. So yes, this looks like an answer. I'll put a tick to emphasize that the economic conditions in Gujarat are the main driver behind illegal migration. No, economic conditions are good. To argue that migrants from Gujarat are more likely to succeed in their quest for a better life, completely out of scope. ये बात कहीं पे भी नहीं हुई है कि अगर गुजरात से illegal migrants जाते हैं तो वो अच्छा करते हैं बाहर जाके, nothing like that. Answer B, beta. And finally, we wrap up the session today, class. I very much hope कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला. You got some nice practice questions today. Fine. I would request you to solve a lot of passages. Okay. Idioms, fillers, जो जो मैंने चीजें कराई हैं, थोड़ी थोड़ी practice करते जाओ. And be more than happy if you make it big that day, and if you make us proud. All the very best. Okay, stay calm, stay focused, put your best foot forward, and you're sure to win. All right, you are winners. Bye bye, take care.